Hello and welcome, my dear friends. Today we'll talk about polyamides. This is the next category, or we can say second category of condensation polymers. And in this we'll be talking about nylon 66, nylon 6 and nylon 610. So first of all, we look at nylon 66. Nylon 66. So how you can prepare nylon 66 as a polyamide, as a condensate polymer? You are having certain things in it. Number one is what are the monomeric units and what are the reaction conditions. So we have monomers in it. It's a copolymer of two monomers. The first monomer is hexamethylene diamine. Hexamethylene diamine, that is NH2 single bond CH2. ये लगभग 6 कार्बन्स हैं CH2 करके. Then NH2, it's called hexamethylene diamine. And next monomer is adipic acid. Adipic acid is basically hexane dioic acid. So it's like C double bond OOH, then CH2 whole 4 C double bond OOH. आप देख सकते हैं यहाँ 4 कार्बन्स हैं और ये 5 कार्बन, ये छठा कार्बन है. So it's hexane dioic acid and it's hexamethylene diamine. So they basically react to each other under the conditions of nitrogen atmosphere and 180 to 220 degree Celsius temperature. So under these conditions they react, they condense each other to form a monomeric unit, which then polymerizes to form nylon 66. And 66 comes from basically the fact that there are 6 carbons in one monomeric unit and there are 6 carbons in another monomeric unit. 6 carbons in each monomeric unit. In each monomeric unit. अगर देख सकते हैं यहाँ इस monomeric unit में 6 कार्बन्स हैं, इस monomeric unit में भी 6 कार्बन्स हैं. ये 4 है यहाँ और ये 5 और ये 6. So in these two monomeric units we have in each case 6 carbons. That's why there is nylon 66. So how they react? Let's have a look. So we are having NH2 single bond CH2 whole 6, NH2 plus C double bond OOH single bond CH2 whole 4 C double bond OOH. N2 atmosphere, 180 to 220 degree C is the temperature. Once they react, इसमें से H निकलेगा, इसमें से OH निकलेगा, तो water निकलेगा बाहर. So it's a condensation. Minus H2O. So you are actually getting NH2, ये वाला NH2 single bond CH2 whole 6. Then there is N. अब यहाँ पे एक H निकला इस OH के साथ. So one H has been taken up by means of this OH. तो यहाँ पे एक ही H रहेगा. So it's NH single bond. यहाँ पे रहेगा C double bond O, C double bond O. Then there is CH2 whole 4. Then there is C double bond OOH. Now ये जो entity आपका यहाँ से बना, if you can look at this entity, ये जो लिंक यहाँ पे डेवलप हुआ, दिस इज द अमाइड लिंकेज. अब यही जो है n टाइम्स कंबाइन होके आपका पॉलीमराइजेशन होता है. सो यू आर हैविंग पॉलीमराइजेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट. आप कैसे पॉलीमर बना सकते हैं? आई टोल्ड यू राइट नाउ. हेक्सामेथिलीन डायमाइन में से जो NH2 है, इसमें से H निकलता है, तो यहाँ से हम H निकालेंगे. विल पुट द डैश हियर. देन एक ही H रहेगा N. देन देयर इज CH2 होल 6. देन देयर इज NH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, और बिल्कुल ऐसे ही जैसे ऊपर लिखा है, होल 4. देन C डबल बॉन्ड O. अब एडिपिक एसिड में से क्या निकलता है? OH. तो OH निकालो, यहाँ पे डैश कर दो, होल N कर दो. ये आपका जो है नाइलॉन पॉलीमर बनेगा, एंड दिस कॉल्ड एज नाइलॉन 66. व्हाई? बिकॉज देयर आर 2 monomeric units and in each monomeric unit there are 6 carbons. Here also 6, here also 6. 4 plus 5 and plus 1 is 6. So that's why it's called a nylon 66. And this is the linkage which is the amide linkage. This is the linkage which is amide linkage in each
in this particular polymer, so it comes in the category of polyamides. I told you it comes in the category of polyamides. I hope you understand it. Now, what are its properties? First property is it's having high mechanical strength. जो आपका नायलॉन 66 है, it's having high mechanical strength, high toughness. उसका मतलब यह है कि it is strong and not easily broken. High toughness, high stiffness. High stiffness का मतलब यह है कि not easily bend and having hardness. So it's hard, it is stiff and it is tough. ये जो पॉलीमर है आपके पास नायलॉन 66, it's having high mechanical strength, it's tough, it's having high toughness, it's having high stiffness, it's having high hardness. So it's a strong material which cannot be broken easily. It's a strong material which cannot be bent easily. So it's having high mechanical strength. That is the nylon 66. It's having good fatigue resistance. Good fatigue resistance. मतलब ये कि it can withstand for wear and tear. Can withstand for wear and tear. मतलब आप इसका कितना भी इस्तेमाल करेंगे ये घिसेगा नहीं. ये इसका wear and tear जो है वो कम है because of having high fatigue resistance, good fatigue resistance. Next, it's having good insulating properties. It's used as insulator, good insulating properties. So it's used as insulator. Next is, it is resistant to fuels and oils. Oil से और fuel से इसका असर नहीं पड़ेगा. It's resistant to fuels, or we can say oils. It's having high water absorbing capacity. High water absorption. It can absorb water easily. It's lightweight. ये polymer जो है वो lightweight है. It's a lightweight polymer. It's slippery also. आपने देखा होगा जब आप socks पहनते हैं जो नायलॉन्स के बने हुए हैं तो you have high chances to get slip. So that's it, slippery. So किस में इस्तेमाल होता है? It is used in making ropes. नायलॉन के ropes हमारे पास होते हैं. It is used to make bristles for brushes. जो ब्रशेस होते हैं उसके जो ब्रिसल्स होते हैं वो नायलॉन के ही बने हुए होते हैं. एंड इट इज यूज्ड टू इट इज यूज्ड इन गियर्स एंड बेयरिंग्स. सो गियर्स जो होते हैं या बेयरिंग्स जो होते हैं उनमें भी जो है ये नायलॉन इस्तेमाल होता है. सो दीज आर सम ऑफ द यूज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ this nylon 66 and its preparation. In addition to this particular polymer, we have other polymers also that include, we are having nylon 6. We are having nylon 6 and nylon 6 जो है what is it? It's basically जब आप हीट करते हैं अमाइनो कैप्राइक एसिड, so it's produced or formed by heating amino caproic acid.
heating aminocaproic acid under N2 atmosphere at 220 to 260 degrees Celsius, you are getting caprolactam. Then that polymerizes to form nylon 6. आप देख सकते हैं, आप इसके जो मोनोमर्स हैं वो लिख सकते हैं. मोनोमर अगर नीट में क्वेश्चन आएगा या आपके बीटेक में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, सो यू आर हैविंग मोनोमेरिक यूनिट एज अमाइनो caproic acid, ROIC, caproic acid, or you can have caprolactam also. Both are correct. So aminocaproic acid is also the monomer of nylon 6, or you can say caprolactam. This is also the monomeric unit. So most oftenly we are basically taking caprolactam as the monomeric unit for nylon 6. So how you can make it? Let's have a look. आपके पास है NH2 single bond, CH2 whole 5, then there is C double bond OH. इसमें ये एक साइड से ये कार्बन चेन है 5 कार्बन की, और एक साइड से आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, दूसरे साइड से अमाइनो ग्रुप है. सो दिस इज कॉल्ड aminocaproic acid. So this is here aminocaproic acid. aminocaproic acid. अब इसमें कितने कार्बन हैं इन टोटल आप देख सकते हैं. यहाँ ये NH2 ग्रुप है, इसमें 5 कार्बन यहाँ हैं, और छठा कार्बन जो है दैट्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. दैट्स व्हाई दे आर हैविंग 6 कार्बन इन टोटल. दैट्स व्हाई यू हैव द लेटर हियर, यू हैव द नंबर हियर 6. सो इट्स नाइलॉन 6. सो व्हाट हैपेंड, जब आप इसको हीट करते हैं टू 220 डिग्री सेल्सियस टू 260 डिग्री सेल्सियस अंडर N2 एटमॉस्फेयर, क्या होता है कि इट बेसिकली कंडेंसेस इटसेल्फ. इसमें से OH निकलता है, इसमें से H निकलता है, यानी कि एक साइड से जो NH2 ग्रुप है, दूसरे साइड से जो OH ग्रुप है, OH में से OH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में से OH निकलता है, और NH2 ग्रुप में से H निकलता है. इट फॉर्म्स वाटर. सो वाटर गेट्स एलिमिनेटेड. सो माइनस H2O, तो एक साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर बनता है. दैट इज लाइक दिस. NH, यहां पे मैं होल 5 करता हूं बिकॉज दे आर 5 कार्बन्स, और यहां पे बनेगा C डबल बॉन्ड O, और ये N जो है ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा. मतलब NH कंबाइंस विद C, NH कंबाइंस विद C डबल बॉन्ड O, OH निकल करके H के साथ निकल करके, और यहां पे है 5 कार्बन्स एज सच. नाउ दिस इज कॉल्ड एज कैप्रोलैक्टम. दिस इज कॉल्ड एज कैप्रोलैक्टम. This caprolactam then polymerizes. So we can show the polymerization reaction here. So you are having NH whole 5, then C double bond O. अब इसका polymerization होता है. Polymerization. So you are getting a polymer that is C double bond O, NH, CH2 whole 5. होल N करेंगे आप. दिस इज कॉल्ड एज, अगर N टाइम्स होगा, दिस इज कॉल्ड एज नाइलॉन 6 बिकॉज देयर आर ओनली 6 कार्बन्स इन द मोनोमेरिक यूनिट. सो दिस इज द नाइलॉन 6. इसमें भी अमाइड लिंकेज प्रेजेंट है, सो दैट्स व्हाई इट कम्स इन कैटेगरी ऑफ पॉलीअमाइड्स. इसकी खासियत यह है कि जब ये चेन, ये एक चेन है, ये दूसरी चेन साइड बाय साइड रखेंगे, इस C डबल बॉन्ड O जो है ये इट विल बेसिकली गो फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द NH ग्रुप ऑफ अनदर चेन. मिसाल के तौर पर आपकी एक चेन ये है, इसमें ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप है यहाँ, ठीक, इसमें NH ग्रुप है यहाँ अमाइड लिंकेज करके, और ये दूसरी चेन है, इसमें यहाँ NH ग्रुप है, तो यहाँ C डबल बॉन्ड O ग्रुप है दूसरे वाले चेन का. तो व्हाट हैपेंड, दे गो फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका O इसका H, दे गो फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका O इसका H, दे गो फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो ये जो चेन्स हैं दे विल lie on each other because of hydrogen bonding. So due to this ability of hydrogen bonding between polymer chains, nylons are usually excellent strength. They are having excellent strength, and they can be used as fibers. So we can write the statement here: due to H bonding between polymer chains, they are having excellent strength and
hence make excellent fibers. इससे excellent fibers बनेंगे because of having excellent strength, and that comes from the hydrogen bonding between the neighboring polymer chains, neighboring nylon 6 chains. I hope you understand it. In addition to this, ये जो कैप्रोलेक्टम है ये एक इंटरमीडिएट बनता है, और मोनोमेर यूनिट आपके पास क्या है? That is the amino caproic acid, or we can say caprolactam. And now, in addition to this nylon 6, we are having one more that's called as nylon 610. So what is nylon 610? Nylon 610 is basically a kind of polymer, a polyamide again, in which the monomeric units are. So what are the monomeric units? Again hexamethylene diamine, जो nylon 6,6 में था. Hexamethylene diamine, that is NH2, single bond, CH2 whole 6 NH2. So it's hexamethylene diamine, जो nylon 6 में monomer था. And next monomer is sebacic acid. Sebacic acid, what is that? उसमें एडिपिक एसिड था, इसमें सेबासिक एसिड है. व्हाट इज इट? इट्स बेसिकली हैविंग कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ऑन वन साइड, देन देयर आर 8 कार्बन्स, देन C डबल बॉन्ड OH. सो इन टोटल देयर आर 10 कार्बन्स. आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 कार्बन्स है, यहाँ पे कितने हैं? 8 कार्बन ये है, ये 9वां कार्बन और 10वां कार्बन. सो देयर आर 10 कार्बन्स इन सेबासिक एसिड, while as in case of adipic acid there were 6 only. That's why it was called as 6,6 and it's now called as 6,10. So 6 comes from 6 carbons of one monomeric unit, that's hexamethylene diamine, and 10 carbons from sebacic acid. I hope you understand it. So ये जो कंडेंस होंगे ये आपस में कंडेंस हो जाएंगे. कंडेंस होने के बाद में ये एक यूनिट बनाएंगे, that then polymerizes to form your polymer. How that's true? Let's have a look. So आपके पास यहाँ पे है NH2 group, then CH2, then whole 6, then NH2, then again plus करके आपके पास है carboxylic acid group, then there are 8 carbons over here, then इसमें से OH निकलेगा, इसमें से H निकलेगा, तो it forms NH2, then single bond CH2 whole 6, then there is NH, एक H निकल गया OH के साथ, तो यहाँ पे C double bond O combine हो जाएगा, whole 8, then C double bond OH. ये जो है n टाइम्स फिर पॉलीमराइज हो जाएगा, सो यू आर गेटिंग ए पॉलीमर दैट इज, इसमें से H निकलेगा तो NH रह जाएगा डैश करके, देन देयर इज CH2 होल 6, देन देयर इज NH C डबल बॉन्ड हो ये वाला, देन देयर इज CH2 होल 8, देन देयर इज C डबल बॉन्ड हो, इसमें से OH निकलेगा तो डैश करके होल N हम करेंगे. दिस इज कॉल्ड एज नाइलॉन 610. Because there are 2 monomeric units. In one monomeric unit there are 6 carbons only, in another there are 10 carbons from sebacic acid. So this is called as nylon 610. इसमें भी ये linkage अगर आप देखेंगे, ये वाली linkage, so this is the amide linkage over here. So again it comes in the category of polyamides. So they have the properties and uses similar to what we studied in nylon 6,6. I hope you understand it. So this was all about the condensation polymers. Yesterday we talked about polyesters, in which we talked about an example that was terylene, or we can say dacron. Today we talked about polyamides. In that particular category we are having nylon 6,6, nylon 6 and nylon 6,10. All these polymers are having almost similar properties. So hopefully in the next video we shall be dealing with the rubber and the related issues. Till then, take good care of yourselves, and if you are new to my channel and if you like my videos, please do not hesitate to subscribe and share it. Thank you very much.